हाय सय्यद सर बोलतोय का? गव्हाणे सर आवाज येतोय ना? हा येतोय ना सर, येतोय. बरं बरं येतोय म्हटलं. हो. ओके 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 ओके. ओके सर ओके. हेलो हा तंगलवाड सर. सर जी नमस्कार. नमस्कार. येतोय ना आवाज? हो आवाज क्लिअर येतोय सर. काय करा सर, चालू होईपर्यंत सेटिंग बदला सध्या. बरं बरं बरं. कार्यक्रम चालू होईपर्यंत सेटिंग बदला आणि कोणला मध्ये ऍड करून घेऊ नका आताच फोनला. बरं. सेटिंग पूर्ण होईपर्यंत बाहेरच्या लोकांना आवाज यायला नाही पाहिजे ना. हा किर्दक सरला सांगत असं किर्दक सर. किर्दक हा, सर. तसं काय करा, सेटिंग बदला, आपलं झूमची सेटिंग बदला आणि ते ऍडमिट करून घ्यायचं जे आहे ना ऍडमिन, त्यांना सांगा की बाबा लगेच लोकांना ऍड करून घ्यायचं. झूम मीटिंग ओपन करा म्हणून. हाँ किर्दक सर, आवाज आ रही किर्दक सर? आपकी आवाज नहीं आ रही किर्दक सर. हाँ गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आभार. सय्यद सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. अब आ रही, मेरी आवाज आ रही क्या आपको? हाँ सर आपकी आवाज क्लियर है सर. अच्छा अच्छा अच्छा. बाकी के लोगों को अनम्यूट कर, क्योंकि बहुत आवाज आ रही बाकी के लोगों की. हाँ बराबर है सर. हाँ हाँ चलिए. बरं ठीक आहे ओके. मेहमान हाँ घारगे मॅडम, पाहुणे जॉईन झालेत का? हाँ सर नमस्कार. नमस्कार. पाहुणे नाही झाले. बरं एक वेळेस फोन करावा त्यांना. हॅलो
मॅडम पाहुण्यांना फोन करून सांगा एकदा. हा सर बोला. पाहुण्यांना फोन करून सांगा एकदा. सर ओके ओके मॅम. सर केलंय फोन सर. माझा आवाज येत नाही का किर्जक सर? आहे ना आता मला येतोय. हा येतोय, आवाज येतोय मॅडम. सर सगळं ते नेट प्रॉब्लेम आहे, थोडं कनेक्टिंग उघडं करा. ओके. तुमची खुर्ची इथे घ्या ना अशी जवळ. दिसते उघडा उघडा. कशा सर फार अंधार वाटायला होते, उघडावंच लागतंय. काय म्हणतायत त्यांचं म्हणणं काय? वेळ होत आलाय आणि आपण जो गोंधळ केला ना त्याच्यामुळेच वेळ होऊन जाईल. हॅलो मेघना. हा मावशी.
असल्यासारखं मावशी तुझं तुझं नेटवर्कचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, तुझा आवाज येत नाहीये. एक मिनिट मी फोन करतो. हॅलो. आवाज येत नाही मॅडम, आवाज येत नाही जरा. सर सर आवाज बरोबर येत नाही, आवाज क्लिअर येत नाही. आता आला का? हा आता यायला लागला. हा हा हा. डॉक्टर सय्यद सर. नमस्कार सर. सर गुड मॉर्निंग. हॅलो. कदम सर नमस्कार. व्हेरी व्हेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कार्यक्रमाला सर्वांना शुभेच्छा. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. धन्यवाद धन्यवाद सर. थँक्यू थँक्यू. करायला काय हरकत नाही. आहेत जॉईन होणार आहेत. मॅडम आवाज येतोय का माझा? मॅडम येतोय सर, येतोय आवाज.
हाँ सही सर हा बोला सर. ये आवाज येत नाही सर, आवाज येत नाही. कीर्तक सर आवाज नाही आला आपला. अच्छा एक हाँ अभी आवाज आ रही है हाँ अभी आ रही है सर, आप बोलिए. हाँ अभी हॅलो कीर्तक सर आवाज येतो का? हा आला सर, आला सर. हो सर येतोय आवाज येतोय. ऐका ना ऐका. मॉर्निंग सर एंड वेलकम सर याचं जे कोणी ऑपरेट करताय ना हे त्यांना सांगा फक्त जेवढे स्पीकर हो आहेत तेवढ्याचे साऊंड ओपन ठेवा, बाकीचे सगळे म्यूट करून टाका ना, म्हणजे सांगितलं आवाज सर आपण क्लिअर येईल. बाकी सांगितले सर आपण त्यांना करताय सगळं. आहेत एक मॅडम आहेत हा, मेघना मॅडम मॅडमला सांगा कीर्तक सर, मॅडमला सांगा. साधना मॅडम. मेघना मॅडम मेघना मॅडम. हा सर मी केली आहे ती सेटिंग. बरं बरं हे जे जेवढे आवाज आपले येतात ते सगळे आपले स्पीकरच आहेत. बरं. जेवढे स्पीकर आहेत तेवढ्याचेच ओपन ठेवा, बाकीचे बंद करून ठेवा, तर तुम्हाला आवाज क्लिअर येईल, नाही तर येणार नाही. ओके सर ओके. आणि कॅमेरे बरेच लोकांचे बंद केलेत. सर. कॅमेरे चालू करा, ज्याला चालू करायचा ते करतील, पण तुमच्याकडनं चालू राहू द्या. आणि ते झेरॉक्स मशीन साठी केला होता मला फोन. तुम्हाला ऐकू येईल ना? नाही ऐकू येईल. बोलत नसेल. एक पार्टिसिपेंट बघतो का किती आहेत पार्टिसिपेंट? एकच. फिफ्टी सिक्स. आवश्यकता का त्याची? नाही ना. भोगे सर गुड मॉर्निंग वेलकम सर. हाँ गुड मॉर्निंग. आर यू रेडी? वेलकम सर. यस सर वी आर रेडी सर. Shall we start? Yes, sir, within few minutes, sir. Okay. गुड मॉर्निंग सर. Yes sir within few minutes sir. Okay, okay. हॅलो शिंदे सर. हा बोला. हा आवाज येतो का क्लिअर? बोला. हा येतो क्लिअर येतो. आता बोधे कोणी बोल नका, फक्त त्यांना बोलू द्या कीर्तक सर. गार्गे मॅडम. गार्गे मॅडम. कीर्तक सर. Yes sir बोलिए सर. वो कोहेकर मैडम और वीर सर ज्वाइन हो गए थे. स्क्रीन पर तो दिख नहीं रहे सर. मेघना मैडम. हॅलो वीर सरांना आणि कोहेकर मॅडम. हा सर मी जॉईन झालेली आहे. पुणेकर मॅडम जॉईन झालेली आहे सर मी. ओके थँक्यू मॅडम वेलकम टू यू.
तुम्हाला कसं म्हणायचं तसं म्हणा. नाही आलं म्हणायचं. माझ्याकडे आलेलं नाही. त्या लोकांनी त्यांना काढून दिले होते मी. हा कीर्तक सर. हाँ सर. हेलो. आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही? जी सर. अच्छा, हो गए, ज्वाइन हो गए दूसरे मेहमान? यस सर, आवाज अभी भोगे सर ज्वाइन हुए सर, प्रीति मैडम जी, ज्वाइन हो जी. गए. हाँ देखा मैंने सर को. हाँ. वीर सर मुझे दिखे नहीं स्पॉटलाइट. जी जी जी. मेघना मॅडम, वीर सर जॉईन झाले? कोणते सर? वीर सर. वीर सर. वीर सर धर्मराज नाही सर. वीर. नाही. आणि पोहेकर मॅडम लातूर. हो आहेत. आहेत त्या ना? आहेत पण त्यांचं त्यांनी सगळं म्यूट आणि व्हिडिओ बंद केले. बरोबर. प्रिन्सिपल सर, मी तुमचा व्हिडिओ स्पॉटलाइट करते, म्हणजे जर दुसऱ्या कोणाचे व्हिडिओ असतील ना तर ते लाईव्ह वरती दिसणार नाही. बरं. पार्टिसिपेंट स्वतःला प्लीज अनम्यूट करू नका आणि शक्यतो व्हिडिओ ही आपण ऑफ ठेवूया सगळ्यांचे, म्हणजे स्पीकरचे आपल्याला पाहता येते. नाही कोणला करताय का? नाही आता करावं लागतं. क्लिअर चला ह्यांना सेटिंग सरांची साहेब जॉईन नाही झालेत. मॅडमनी साहेबांना लिंक पाठवली का? हो, लिंक पाठवली सर, परंतु बरं. आणखी काही. हा बर बर बर. हा मॅडम लिंक पाठवलेली आहे ना? घारगे मॅडम. घारगे मॅडम. सर त्या फोनवर बोलताय तिकडं? बर बर. साहेबाशीच बोलतायत बहुतेक. हा. कोण कोण आहे ते
Hello, sir. Good morning. Sir, good morning. Good morning. How are you, sir? Hello, sir. How are you? Sir, how are you? Fine, sir, fine. याच्यातले पायवर सगळे महाराष्ट्रातले आहेत का महाराष्ट्राचे बाहेरचे आहेत? तर आता इकडे सगळे विषय सुरू झालेत का काय राहिलेत काय कसं आहे पिरियडचं कुठले सायन्सचे कॉमर्सचे आर्ट्सचे सर शुरू कर रहे हैं अभी। साहब ज्वाइन हो गए क्या साहब? साहब थोड़े एंगेज हैं सर। हाँ? साहब थोड़े काम में है, बाद में ज्वाइन होते बोले। ऐसा बोले क्या? हाँ, मैडम को फोन आया था अभी। अच्छा, शुरू करो बोले क्या उन्होंने? हाँ सर, बाद में ऑफिस जाने के बाद में ज्वाइन करते बोले। नहीं, ये शुरू कर दो बोले क्या? हेलो, आवाज बहुत आ रही है। हाँ, शुरू कर दो बोले। बोले ना, चलेगा फिर शुरू। आर्या मैडम को पूछो ना, शुरू करो बोले क्या? मैडम शुरू करेंगे? हाँ सर, शुरू करेंगे। हाँ सर, हम शुरू करेंगे अभी। हाँ चलिए। शिंदे सर, जमलं तर हेडफोन लावा ना प्लीज। Good morning, everyone. This is Vinod Kirdak. Warmly welcome you all on the occasion of one-day interdisciplinary national conference on role of administration in Indian contemporary society, organized by Department of Public Administration and Department of Library of Jai Bhavani Shikshan Prasarak Mandal, Gevrai, Arts and Science College, Patoda District, Bid. I'm thankful to you all for joining us across the country for today's webinar. This webinar is truly relevant in the time of COVID-19, and this would explore many aspects of administration in the time of medical emergency like COVID-19. And I hope that you all are fine in this medical emergency. For today's webinar, we have with us as an inaugurator, but our patron, young and dynamic personality in political and educational field, Honorable Amartya Pandit, ex-MLA of Gevrai constituency and General Secretary of Nationalist Congress Party of Maharashtra State and President of Jai Bhavani Shikshan Prasarak Mandal Gevrai. I welcome him
though he is not present right now, but after a short time he will join us. Then we have with us Dr. Sharad Kulkarni sir. He will be giving us guidance on this occasion. I welcome you, sir. Then we have with us today's keynote speaker, Honorable Sri Krishnaji Bhoge sir, an eminent administrator, humanitarian personality, and ex-divisional commissioner of Aurangabad region. I warmly welcome you, sir, on behalf of the college. And for the today's webinar, we have chairperson, principal of the college, Dr. Shaukat Syed, sir. I welcome you, sir. For today's webinar, we have with us renowned resource persons. For the first session, Dr. Dharmaraj Veer is a resource person. He is currently working as Director of Knowledge Resource Center at Aurangabad at Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. His contribution in library, he will be speaking on impact of COVID-19 on libraries. I warmly welcome you, sir, on behalf of the college. For this session, we have an eminent speaker, Dr. Preeti Pohekar, Professor and Head Department of Public Administration at Rajarshi Shahu College, Latur. She will be, I welcome you, madam, on the respected participants for this year from every corner of the country. Now, without taking much time, I move on by Dr. Kalpana Gharge, head for introductory speech about organization of the webinar. Dr. Kalpana Gharge, over to you. Good morning to all and welcome to all. The President आवाज नहीं है. हॅलो हॅलो हा बोला, येतोय आता. आवाज येतोय सर? हॅलो. आता येतोय, बोला. Good morning and welcome to all. Our patron the president of our institute, Honorable Marsiha Bhaiya Saheb Pandit, President Bhavani Shikshan Prasad Mandal Gevrai, Principal of the college, Dr. Shaukat sir, respected Sri आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है. Hello. हाँ. Welcome to respected Sri Krishna Bhoge sir, ex-divisional commissioner of Marathwada region. And I welcome to today's resource person, Dr. Dharmaraj Veer sir, Director of Knowledge Resource Center, Dr. आवाज नहीं आ रही मैम. Participants and the Ajanta and Meghna Joshi
to supporting technical support. Considering the need of contemporary, we have organized one day interdisciplinary national e-conference. मेघना मैम, आवाज बहुत कम आवाज ही नहीं आ रही। सर उनके नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है, देखती हूँ वापस से। सर ये कल्पना मैडम की नेटवर्क का इशू है। हाँ बोलिए मैडम। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। सर उन्होंने रीजॉइन किया है, 1 मिनट। अच्छा, मुझे भी थोड़ी सुन रही हेलो। मैं कोशिश कर रही हूँ, 1 मिनट। अच्छा, I'm extremely sorry for disturbing a technical problem. Sorry once again. I welcome to all and continue my presentation. The concept of administration is a very broad term, but informally it starts from home and there is no limit its working area. On the role of administration, it will address such areas as a sustained economic growth, the promotion of social development, infrastructure development, and protecting the environment and promoting public-private partnership and managing development programs and maintain a legal framework from development. Change is the natural process and accepting new changes is the challenge of contemporary era. Administration helps to adopt new changes and even to define new policies of requirement. Hence, administration, we have organized today's conference. You all of behalf of I welcome to all for this. और आखिरी बार जाते जाते आज 14 सितंबर हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिन की मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हिंदी दिन की सबको शुभकामनाएं। एंड नेक्स्ट सेशन विल बी कंटिन्यू टू डॉक्टर चिरदत्ता। Thank you so much, madam, for your introductory speech on the connective issue, but you have done it. Thank you so much for your speech. Now, may I request to the principal of the college, Dr. Shaukat Syed sir, for the welcome speech. Over to Syed sir. आवाज आ रही है सर? हेलो, जी आवाज सर, आ आ रही रही है। अच्छा जी सर,
सबसे पहले सभी का स्वागत। आज के एक दिवसीय नेशनल ई कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटक हमारे जय भवानी शिक्षण प्रसारक मंडल गेवराई के अध्यक्ष, भूतपूर्व विधायक तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव आदरणीय अमर सिंह जी पंडित साहब, मुख्य बीज वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय कृष्णा भोगे जी, जो हमारे मराठवाड़ा विभाग के कमिश्नर रह चुके हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद का चार्ज भी सर के पास काफी समय तक था। उसी समय सर की खूबियां देखने को मिली। सर ने एक कुशल प्रशासक के रूप में ख्याति प्राप्त की है। सर का इस कॉन्फ्रेंस में रहना हमारे लिए गौरव की बात। हम सभी सर के वक्तव्य से लाभान्वित होने वाले हैं। रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर धर्मराज जी वीर, संचालक नॉलेज रिसोर्स सेंटर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, तथा दूसरे रिसोर्स पर्सन के रूप में प्राध्यापक डॉक्टर प्रीति पोहेकर जी, राजश्री शाहू कॉलेज लातूर से हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आयोजक हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हेड डॉक्टर कल्पना घारगे, जो विगत 1 माह से निरंतर इस सारस्वत आयोजन के लिए प्रयासरत है। आज उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। सह आयोजक डॉक्टर महारुद्र गवाणे, मेरे सभी सहयोगी प्राध्यापक, तांत्रिक सहयोग करने वाले सभी सदस्य तथा नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी कर्मचारी, आप सभीयों का मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे महाविद्यालय की स्थापना जून 1989 की है। हमारे जय भवानी शिक्षण प्रसारक मंडल के संस्थापक अध्यक्ष तथा भूतपूर्व मंत्री आदरणीय श्री शिवाजीराव जी दादा पंडित साहब ने इस महाविद्यालय की नींव रखी। दादा का मकसद एक ही था कि पाटोदा जैसे ग्रामीण क्षेत्र के किसान परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो। इसी एकमात्र हेतु के कारण इस महाविद्यालय की स्थापना 1989 में आदरणीय दादा ने की। इस महाविद्यालय में आर्ट्स और साइंस 2 फैकल्टी के माध्यम से पदवी तक की शिक्षा दी जाती है। पिछले 30-31 वर्षों में हमारे इस महाविद्यालय ने इस ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को हायर एजुकेशन का अवसर प्रदान किया। इसी के साथ उन्हें उचित रोजगार तथा नौकरियों का अवसर देने के संदर्भ में हमेशा मार्गदर्शन किया। अनेकानेक क्षेत्रों में छात्रों को रोजगार तथा नौकरियों के अवसर प्राप्त हुए, जैसे सेना में, पुलिस विभाग, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, शिक्षक तथा राजनीति के क्षेत्र में विविध ओहदों पर अनेकानेक इस महाविद्यालय के छात्रों ने नेट सेट तथा पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की है। हमारा निरंतर यह प्रयास रहता है कि इस क्षेत्र के छात्रों को रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए हमेशा उन्हें मार्गदर्शन किया जाता है। आज की इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में आमंत्रित सभी मेहमान परम ज्ञानी हैं। उनके ज्ञान को आप सभी आत्मसात करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर एक बार आज मैं सभी वक्तागण मेहमानों का पुनश्च स्वागत करता हूं। और आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words and blessings to the conference. Dr. Sharad, he will be speaking with us on this occasion as a blessing. And Dr. Sharad Kulkarni, sir, is the principal of Nutan College. He is on many academic bodies. He is a peer member of the NAC committee, and he has
a lot of experience of academic activities. So may I request to the Dr. Sharad Kulkarni sir to have his words on this occasion. Dr. Sharad Kulkarni. Hello, Honorable Amar Singh Pandit ji, former MLA and General Secretary of National Congress part of Maharashtra State and President. Honorable Shri Krishna Bhoge ji, former Divisional Commissioner of Marathwada region. My friend Dharmaraj Veer, Director of Baba Saheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad. Dr. Pohekar, Rajarshi Shahu College Latur. Dr. Shaukat Sayyed, our principal friend. Dr. Kalpana Gharge, convener of National Conference. Dr. Maharudra Gawane, co-convener of E-National Conference. Entire team of the conference and director of Ajanta Prakashan and all participants. I want to be a part of this national conference. I congratulate to entire team for the selection of this topic for today's conference. When you have chosen this nice subject, I thought that the Shivaji Maharaj, who is the God for the Maharashtra, is the ideal person for this conference definitely. What Shivaji did, Shivaji Maharaj all the time worked for a common man, and I think that the administration should work for the common man. When we read the papers daily, we see that there are many problems of the people, and all problems should be solved by the administration. All the political leaders or the executive all the time decides the policies, but it should be implemented by the administration. And if the administration works for the society, then India will face no problem. I think the administration should work for the common man, and if the common man will be satisfied, then all the problems will be solved. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind guidance on this occasion and blessing the webinar. Now, I move towards a keynote address. Before inviting for keynote talk, I quickly introduce our keynote speaker, Honorable Krishnaji Bhoge sir, who is very special guest to us. He is ex-IAS officer and retired as Divisional Commissioner of Aurangabad region. He is well known for his Vicar Pro and inclusive administration. He is down to earth person and excellent motivator. He used his administrative position to uplift common people's lives. For some time, he has worked as the acting Vice Chancellor of Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, and he will be always remembered for the work he had done during that short period. After his formal retirement, he was appointed as Chairman of Maharashtra Human Development Mission to study living standard of common people. Along with this, he has delivered many motivational talks and written many books on competitive examination for the benefit of students community. And these books are very popular among the student community. And currently, he is helping students through Bhoge Career Development Academy to make career in administrative service. With these words of introduction, may I invite to Honorable Krishnaji Bhoge sir for the keynote address. It's over to Bhoge sir. Thank you. Can you listen me? Yes, sir. You're audible, sir. Okay. I will start. Yes, sir. Dear learned participants and honorable guests, now before I dwell upon the topic, I would like to draw your attention to important provisions of the Constitution that will define the real role of administration. Now, I will specifically mention Article 37, which says that directive principles
although they are not enforceable in court of law, but they are fundamental in governance of the country. And it shall be the duty of the state to use these principles for enacting any law. So therefore, the directive principles, they constitute the fundamental of governance. Other article is 38(1), which says that the state shall promote welfare of the people by securing social order based on justice, social, economic, and political. There is another article 38(2), which specifically puts the responsibility on the state to minimize inequality in income and to eradicate inequality in social status, opportunities, and facilities in all walks of life, amongst all the people, amongst all the professions and occupations, amongst all the regions. There should be total eradication of the social inequality. So these are the basic provisions of the Constitution, and we'll have to examine the role of administration in the context of what Constitution says. Because Constitution is a holy book for us. We are always guided by what the Constitution says and not by what others says. So in that context, we'll have the discussion on the topic, role of administration in India's contemporary democratic society. Now it is the responsibility of the state. I always focus, it is the responsibility of the state and not of anybody else to ensure effective and proper implementation of Part 3 and Part 4 of the Constitution. This is the basic thing which must be kept in mind when we analyze the role of state administration. Here it is also necessary to mention that responsibility and duties have been passed on the state and not on the private sector. Administrative apparatus of the state works as eyes, ears, and hands of the state. It is the most visible part of the state. Policies designed and formulated by the state to achieve the goals mentioned in Part 3 and Part 4 of the Constitution are implemented primarily by the administration. Hence, state administration plays a very important role in achievement of the goals enshrined in the Constitution to provide a good and happy life to all the people of India, wherever they reside and whatever occupation, jobs they do. Despite adoption of market economy model of development, the role of state administration continues to be indispensable to a large extent. Crisis created due to COVID-19 have amply proved this. It is also a fact that administration is not functioning efficiently, effectively, fairly, and timely. Barring the situation of crisis and calamities, it miserably failed to deliver the goods and services to the people in need of them. It failed to respond to the needs and grievances of the people. One should not hesitate to admit that
administration has nearly paralyzed and enter into the state of coma. But answer to this problem is not to cripple and gradually destroy the administrative system, but to make it healthy, efficient, effective, responsible, and accountable. We need a constructive reforms in the administrative system and not the destructive. Administration is currently engaged in some sort of soul-searching process. Today, some of the major theoretical concerns identified by the experts and thinkers and being discussed at various levels are as under. 1. Adoption of public choice theory generating market versus state debate. 2. Democratic decentralization, what we call devolution, promoting people's participation at all the stages of development, and what we discuss nowadays, why 73rd and 74th Amendment failed to achieve the goal. 3. Empowerment of people at the grassroots level through information, education, and communication. 4. Promoting localization, keeping in view the larger goal of globalization. 5. Thorough scrutiny of Weberian model of bureaucracy, which is suffering from self-aggrandizing, priority distorting, budget maximizing, inward looking, people avoiding, caring syndrome of I know everything. 6. Organization pluralism in the matter of providing goods and services to the people and giving full freedom to the people to select the provider of their choice instead of forcing them to approach state-imposed organization. 7. Adopting informal, non-bureaucratical system of governance. 8. Adopting triple P, that is public, private, and people's participatory model to provide goods and services. 9. Reconceptualizing the government's role. Steering, policy orientation, enabling rather than doing. 10. Promoting transparent and open citizen-friendly administration through citizen charter. 11. Changing the role, male-dominating structure of administration, male-dominating structure of administration by addressing the important general issues related thereto. As you must be aware that even in IAS or All India services, the percentage of women is much less. In the state services now, we have got 33% reservation for women, but that is not the case with All India services. And that is why there is no adequate representation. Even in the political system also, there is no adequate representation. So in general, there is a what we call gender bias. 12, adopting e-governance system for quick information processing, citizens' assistance. The above mentioned issues need to be debated and discussed at all the levels from the point of providing good and happy life to all in full compliance of values enshrined in the Constitution. The practices of traditional administration have come under increasing attack from neoliberal economists and rational choice scholars who have provided intellectual ammunitions to the politicians
determined to reduce the size and role of administration in governance process. Waves of reforms in administration and role of the state in general have been swept through over the last few decades under the societal pressure. Globalization is the latest shift in the emphasis. The market model of governance has been holding central stage since the 80s. In addition to this, there are other models which are being discussed, such as participatory model, deregulated government model, as suggested by Osborne and Gabler in their theory of reinventing government. In the context of market economy model and the model based on reinventing government, the Minubrook 1 and Blacksburg Manifesto have raised the important issue of governance in public interest. What is to be noted with serious concern is that in the context of the third world developing countries, public administration is being crippled in the name of structural adjustment, invoking more and more market economic model of governance in utter disregard of the crucial socio-economic development role of the state in developing nations. Efforts are being made in the name of reinventing government to change the role of administration from people's interest driven to the capital interest focus. This is very important. We are all now diverting your attention from the interest of general public at large to the capital. Every day we think about capital, but rarely we think about the human development. And here lies the perils of externally induced administrative reforms through which most third world developing countries are passing through today. Historically, two contrasting visions have guided the thinkers and analysts. The managerial vision of the administration, which focuses on 3E, that is efficiency, economy, and effectiveness. Another vision is democratic vision of administration, which focuses on social justice, inclusiveness, good life to all, good citizenship, collective thinking and action, societal learning and action. Managerial vision focuses on instrument at the cost of purpose. The managerial vision is devoid of social ethos and values. Public administration as a managerial vision misses altogether the overarching perspective of democratic polity. Globalization is certainly presenting many opportunities. However, only the countries that have in place an effective administrative system, strong economic and political institutions, adequate and inclusive socio-economic policies, and public interest committed social political leadership can ensure that all sectors of society benefit from greater integration into the world economy. What countries need must, in order to enable people
to enjoy the benefits of globalization is to focus on strengthening their institutions, develop human resources capacity, and achieve technological adequacy. We should keep in mind the ground reality that globalization has marginalized many, particularly the most deprived sections of society. To combat this, we need to adopt governance model that embrace transparency, accountability, and stakeholders' participation in policy debate and utilization of resources. Special emphasis needs to be laid on the perceived impact as well as actual consequences of globalization on the administrative system of the developing countries like India, particularly on administrative ethos and values, as well as development ethics. Time has come to debate the basic and fundamental issue whether market economy model of governance and globalization. We strongly suggest replacement of existing administrative system by some other non-governmental informal mechanism are in compliance with the goals enumerated in Article 37, 38, and other provisions laid down in Part 4 of the Constitution, and also the philosophy and values of humanity enshrined in the preamble. Does market economy model of governance believes in social justice? Inclusive development and good and happy life to all? Will crippling of administrative systems serve the purpose of achieving goals enshrined in the Constitution? We should be guided by the philosophy and values of our Constitution and not by the Western thinking of development and social life. Time has come to debate and discuss what is meant by good and happy life to all in a democratic society. But this debate and discussion should not remain confined to few who consider themselves as great thinkers, but who are actually totally detached from the grassroots level situation. It should cover all the sections of society from top to bottom in an atmosphere of full freedom. If you want to achieve the goals and values enshrined in the Constitution, we need not only be a democratic society, but also be a compassionate society. Mere democratic society will not serve the purpose. Society must be, in addition to democratic, a compassionate society. As you are all aware that in Global Happiness Index for 2019, we are at the bottom. Even the countries like Pakistan, Nepal, and Bangladesh are above us. The reason is that our society is not compassionate. There is a lack of trust among the people, and philosophy of social assistance is lacking. Day by day, societal structure getting fragmented on the basis of religion, caste, creed, language, politics, and political leadership. This situation
has created lot of problems for the administration to perform its legitimate functions and deliver the goods and services to the people. Nowadays, public interest is gradually getting replaced by self-interest and political interest. Today, we don't find social leadership. We have got only the political leadership. Now, for a political leadership, it is a fact that for them, self-interest and political interest is at the top and not the public interest. So unless we develop a strong social leadership, public interest will not be protected. Unfortunately, it is also a fact we must admit the political leadership does not allow the social leadership to develop. Reason is the political leadership does not want a system which is competitive to them. That is also to be kept in mind. All this problem has created a lot of problem for the administration to perform its legitimate functions. Hence, if you want to improve the administrative system, if you want to reform the administrative system, it is not enough to consider only administrative reforms in isolation. We'll have to consider administrative reforms along with social reforms in the society. Political reforms must also to be considered together. So all three reforms, administrative reforms, social reforms, and political reforms must go hand in hand. Then only we'll achieve the goal of making administrative system really efficient, effective, meaningful. Are we ready for this? Basic question is, are we ready to undertake social and political reforms together with administrative reforms? I think we want only the administrative reforms and not other reforms. Mere blaming administration will not serve the purpose, except engaging ourselves in an unending blame game. Despite the fact that administrative system is criticized by most of them, rightly, the fact is that people, even today, trust the administration. And that is why, as you must be reading in newspaper, whenever there is a question of appointment of administration on village panchayat, people and even the judiciary prefer government officials and not somebody from the public. Now, my basic question is, why people do not want their own person as an administrator? Why they want a government official who is a member of the state bureaucracy, which is being maligned by all, which we all criticize as being inefficient and ineffective. But even then, people still prefer that the government official should be appointed as an administrator on village panchayat and not anybody from public nominated by government. So you will have to answer the question. As you know, we enacted 73rd and 74th Amendment just to empower the people at the grassroots level, just to ensure people's participatory model of development. Despite the fact that 25 years has already elapsed since then, but nobody can say it is successful. 73rd and 74th Amendment both have failed to achieve the real goal of
democratic decentralization and empower the people at the grassroots level. For the localization, empowering the localization. All these questions need to be debated. We know that administration suffers from many problems. I am the first person to accept the blame that admin system has nearly entered into a coma. It is not responding to the grievances of the people. It is not responding to the problems of the people. In fact, the hands are paralyzed. I already given the example that the admin system is like a eyes and ears and hands of the state government. The hands are paralyzed. They are not able to deliver the goods and services. Eyes and ears both are become the dysfunctional. They are not listening the problems of the people, because the administration has to perform a dual role. It has to carry the problems of the people to the political system and then carry the solution designed by the political system to the people to solve the problems. So they perform two-way functions. Now, today, the system is not performing both the functions. So we'll have to find out how to improve upon this present admin structure. But again, I will say, crippling the system or totally demoralizing and destroying the system is not the solution. It will be having a cobra effect. If we try to find out some alternate model based on non-governmental informal sector, which is not really responsible and accountable to the political system, will create a lot of serious problem in future. So, having said all this, we must think in a different direction. How to make the system more efficient. I remember during the British rule, there was a famous saying, "Taint is mightier than the pen." Taint is mightier than the pen. What does it mean? It means the senior officers of administration must camp in the village, stay there for 3-4 days, interact with the people to know their problems. And when they listen and know their problems, then they can design a suitable solution and make suggestion to the political apparatus for appropriate decisions. Because it is a role of the administration. That is a advisory role of the administration to the government. But since, as we know today, most of the senior officers, even the middle level officers, rarely visit the villages. Most of the time they are busy in meetings and meetings and meetings. Now we must find out some way how to make these officers visit the villages at least 8 to 10 days in a month, interact with the people. Why they should not stay in village? Because the people come to the village from the field during night only. So why they should not stay in the village to interact with the people to ascertain their problems? When you live with the problem, you know the problem. You cannot understand the problem if you are sitting away from the problem. So therefore, it is the duty of the senior administrator to mix up with the people, to stay with the people, understand and tune their problems. But today we find that today's administration is people avoiding. They avoid the people. Now here, why they are doing this? We must also understand their difficulties. Government system is such that for most of the time, they are busy only in information collection and communication with government. Rarely they get time to interact with the people. I think that has to be changed, and government will have to do something. How to change this fact? How to make the officers visit villages and problem areas frequently? How to enable them to interact with the people and ascertain their problem? Of course, as we all know, although we do not admit many times,
the system is working under the influence of political pressure. We must admit it, because ultimately the admin system cannot be detached from the political system. Political system is a creation of constitution. Administrative system is a creation of political system. So naturally, the parenthood of the administrative system lies with the political system. So whatever characters political system has, ultimately they are all inherited by the administrative system. So today, as we read in newspaper every day, we do not give full freedom to the admin system to work in public interest. At every stage, there is an interference. No, I do not say that admin system should get itself detached from the political system. That is not. Because in a democratic setup, administration is responsible and accountable fully to the political system. For everything they do, they are answerable to the political system as well as the public. It is their duty to give the account of work they have done regularly, maybe through the press, maybe through the different methods. But we should allow the administrative system to work with a full freedom, and all those authorities must be attached with the responsibility and accountability. So both the things which must be considered together. Political system should try to understand the problem of admin system, and admin should also understand that they are accountable to the political system and the public at large. Today, unfortunately, admin system has forgotten that they are responsible and accountable to a common man. Even a beggar on the street has a right to ask a question to the collector. That is the democracy. But today's administrator, unfortunately, are not ready to accept this. So I will suggest to all my brother administrators who are working in the bureaucratic model, Weberian bureaucratic model, that they must keep in mind that they enjoy the powers and authority through the Constitution. And Constitution is creation of the people of this country. We the people have created this Constitution, and everybody, including Supreme Court to the tune, draws the authority from the Constitution. This particular philosophy, the administrator must understand. Unfortunately, today, most of the administrators, they still work in a different type of what you call the ecosystem. So I will suggest that they should be made answerable, but we should not try to cripple them. We should not try to destroy the system. If we do all these things, I think we can do much better work for the welfare of the people. But we should not forget, it is not enough to have the democratic society. Our society should also be compassionate society, which is not there. People do not recognize even our neighbors. So under this situation, it becomes difficult for the system to work, and lot of unnecessary interferences then to play their own role. With this, I will take your leave. If you have got any question, you can send to me. I will be happy to answer. Thank you. Thank you so much, sir, for your enlightening and enriching keynote address. In your address, you have spoken on a number of issues which is prevailing in our political and administrative system. And with your lucid and clear ideas, you have clearly understood that how welfare state is needed in India, and you have spoken that adequate representation, empowerment of grassroots people, people's participation in policy decision. These are the very vital issues, those to be addressed very clearly.
and you also emphasize on how compassionate society is more important than democratic society. For that, you have strongly said that strong social leadership to be developed in the interest of political and social reform as well as administrative reform in the interest of the common people. And only then and then our political and social system will be improved. So thank you so much for your keynote address and gracing this session. Once again, thank you so much, sir. Okay, thank you. Thank you. Now, thank you, sir. Now we are moving towards first session of the webinar. For this session, we have with us Dr. Dharmaraj Veer sir to address us on the occasion, to introduce our today's speaker, Dr. Dharmaraj Veer sir. Over to Dr. Madan Shinde sir. आवाज येते? सर वीर सर नहीं है मीटिंग में, आप उनको फोन कर लेंगे प्लीज। Yes, आवाज may I audible? Yes. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon to everyone. Today's chief guest and inaugurator of one-day national e-conference, Honorable Mr. Amar Singh Ji Pandit, ex-MLA and General Secretary of Nationalist Congress Party, Maharashtra State, and President of Jai Bhavani Shikshan Prasarak Mandal, Georai, Chairperson, Principal Dr. Syed Shaukat, Arts and Science College, Patoda, and today's inaugurator of this conference, Principal Honorable Sri Honorable Sri Kulkarni sir, and keynote address Honorable Sri Krishna Bhoge, ex-divisional commissioner and Marathwada region. Another resource person, Dr. Preeti Pohekar, professor and head, Rajarshi Shahu College, Latur. Convener, Dr. Kalpana Gharge, HOD, Department of Public Administration. Co-convener, Dr. Maharudra Gawane, librarian, Arts and Science College, Patoda, and respected resource person of this session, Dr. Dharmaraj Veer. I introduce in short to speaker, Dr. Dharmaraj Veer, and today's subject of his impact of COVID-19 on libraries. Dr. Dharmaraj Veer is a director of Knowledge Resource Center, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Dr. Veer has a well-known personality. He has a professional experience of 31 years. Out of that, 4 years in Marathwada Agriculture University, Parbhani, 16 years in Government College, Parbhani, and since June 2008 in Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Library, Aurangabad. He has written and 104 research papers in various journals. He has participated in 60 conferences and seminars. He has a life member of 5 professional associations of national level. He has obtained various awards. Out of that, one is Anant Narayan Gore Award for merit first in library science. Second is third is UG Teacher Fellowship for PhD, and fourth is
Certificate of Excellence National Award 2015 by Karnataka State Library Professional Associations adopting various IP applications in Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Library. He is an editor of Granth Mitra Parivar Monthly Journal and Journal of Library Metamorphosis. He has a PhD guide of 3 universities. Out of one is Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Second is SRT Marathwada University, Nanded. And third, North Maharashtra University, Jalgaon. Under his guidance, 12 PhD students and 30 MPhil students are completed his degree. He has a 165 lectures delivered at international, national, and state level. He has UGC Internet sole coordinator for Maharashtra and Goa region, and his contribution is in drastic change in modernization of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Library during last 5 years. I request to Dr. Veer sir, please deliver your speech. Thank you. Am I audible? Yes, yes, sir. First of all, I appreciate and congratulate to the entire team of one-day interdisciplinary national e-conference on role of administration in Indian contemporary society. And respected Shivaji Raoji Pandit ji, Amar Singh Pandit, Krishna Bhoge ji, the principal Dr. Shaukat Syed, Sharat Kulkarni ji, Kalpana Gharge, who is the convener of this e-conference, the librarian of this college, Dr. Maharudra Govani ji, my friend Dr. Madan Sinde, and all my Nice beloved information, participants, sir. those. Hello. Am I audible? Yes, yes. Hello. Yes, yes, sir. Yes. Friends, first of all, I would like to share my presentation. Please allow me to share my presentation, screen share. Please allow me to sharing of my screen. Done, sir. Hello. Please go ahead. Is it visible? Yes, yes, yes. It is starting Yes. now. Okay. Visible. Friends, nowadays, as you completely aware about today, we are live in a very pandemic situation due to COVID-19. And for that purpose, all educational institutions all over the world and in India are suffering due to such a pandemic situation like COVID-19. If you see the latest higher education survey, that is All India Survey of Higher Education 2018-19, there are 993 universities are there and 39,931 colleges are there. And there are 37.4. ते म्हणले दोघ जण नाश्ता करा. There are 37 point. कसा आहे काय नाश्ता? There are
37.4 million students are studying in various disciplines. Other participants are requested to mute their Please mic. Mute. Please mute. Otherwise, technical And team has to mute there it. are 4,16,000 plus teachers are in the process of teaching all over the India. I know there are different problems faced by colleges, especially in rural area. And as far as concerned with that survey, there are 60.53% colleges are established in rural area in India. Uttar Pradesh, especially for student enrollment, is on rank first. However, Maharashtra is on rank second in student enrollment in India, especially in higher educational institution. For that purpose, especially if the all society, all institutions are suffering by COVID-19, in such situation, the Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University's knowledge for the library of the BAMU is also published one booklet with the help of guidelines given by the government, which will be helpful to take a proper precaution during such pandemic situation. For that purpose, if you see the such a type of guidelines and recommendations, especially for library services during COVID-19, which we have provided and prepared, especially for all stakeholders, it may be students, research scholars, and the faculty members. And for that purpose, definitely we the academicians to prepare with COVID-19, how to live with COVID-19 in such pandemic situation. And for that purpose, we have ready to provide a very effective services, especially how we can provide effective services remotely to all stakeholders. And for that purpose, the Knowledge Resource Center of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University have developed a very beautiful homepage of library, which will come to know that how the facility for all stakeholders can obtain the variety of services and resources with the help of this facility. If you see, there are one PhD style manual which is uploaded on the website, which will be helpful to all research scholars how to write their PhD thesis, how to prepare their conspectus or the chapterization, what type of style of writing is there, especially for a PhD, and what is the reference management. If the document is written by single, double, triple, or more than 3 authors, how they should have to cite very properly. What type of abbreviations, what type of appendices, and what type of format is necessary as far as concerned the higher educational institution. And for that purpose, such a type of style manual which will be helpful, and it is made available as an open access. Anybody can download that style manual. Anybody can print that style manual. Anybody can copy that style manual. And another one is PhD CD submission format. As per the University Grant Commission, which we have already uploaded on the
subdomain of library, and it is mandatory to all research scholars. The student approval form, which is accepted by the University Grant Commission for CD submission of PhD, we have also given the format of student approval form. The another is, during such pandemic situation, the online public access catalog facility is also available. The OPAC faculty come to know that with the help of such a type of facility, which will be helpful to know whether that document, whether that book is made available within the library or not, whether that book is issued, whether the book is written, and whether that book is under process or whether that book is under binding section. Such a type of availability status, we come to know that with the help of that online public access catalog, that is OPAC. However, the another one is, if the document is not available in the BAMU library, then with the help of INDCAT, INDCAT is nothing but it is the Indian catalog. It is the catalog of Indian university libraries in India. That means if the document is not available in BAMU library, then you can search with the help of INDCAT whether that document is available, where that document is, in which university, in Indian university, that document is available, and for that purpose, INDCAT will be helpful. The another digital repository is also developed by the BAMU library, institutional repository. Origin Lab is the software which will be helpful to all research scholars to analyze and interpret the data. EndNote is the software of reference management, which is highly accepted by higher educational institutions all over the world. For that purpose, EndNote facility is made available. And how to use that EndNote, for that purpose, we have given the hyperlink of that EndNote. And with the help of that video clip, anybody can access that video clip and they can operate that EndNote software also. And for that purpose, plagiarism policy, another link. And now University Grant Commission is emphasizing on how to avoid the copy and paste culture in higher educational sector. And for that purpose, plagiarism policy, which is developed by university, and also plagiarism checking form is also made available on the website of BAMU library. And another one is, you are completely aware about that regulation 2018 known as Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institution is made available on the BAMU library. Anybody can access, anybody can download. As well as the BAMU library is using anti-plagiarism software, which is supported by University Grant Commission's INFLIBNet known as Urkund. And for that purpose, how to operate that Urkund, for that purpose, we have also given the tutorial on Urkund plagiarism software. And it is developed by the UGC INFLIBNet. And for that purpose, another one most important software is VOS Viewer, which will be visualizing scientific landscape of our research data. For data collection and visualization, the VOS Viewer will be helpful to all of you. And as far as concerned the style manual, we have given the link of MLA, that is Modern Language Association. The another is APA is also given. Chicago style manual is also given, which will be helpful to take a very proper reference management system. And for that purpose, we have given the appropriate link on our website. This is the snapshot of style manual. Such a type of style manual is made available. And the another one is, if you see right side, this is the CD submission format. Then in which format any researcher, they should have to submit their PhD CD.
For that purpose, this facility is made available. This is the format of student approval form, and it is mandatory to all research scholars. And it is necessary to duly filled by the students and duly signed by the guide and the research scholars. Another one is, this is the how to use that EndNote in 5 minutes. This is the video clip which will be helpful to all research scholars, and such type of facilities made available on the BAMU library website. This is the plagiarism policy application for anti-plagiarism. The format is also given on the website, which will be helpful to all research scholars. The another one is, this is the tutorial on Urkund prepared by Indian universities, for the Indian universities by InfluNet Center, and it is the very effective video which is developed by the InfluNet and narrated by the Manoj Kumar scientist E. The another one is, this is the VOS Viewer, the video clip of that software, which will be helpful to how to visualize our collected data. For that purpose, this software will be helpful. The another one is the UGC's guidelines. This is the letter of that UGC, especially for plagiarism. The another one is, these are the दोन्ही another, संख्येला मल्टिप्लाय करून इथे संख्या लिहायची म्हणलं. these are the another very beautiful links which will help to all stakeholders. And for that purpose, if you see, especially for research scholars, especially for PhD guides, and those who are interested to write a very healthy paper, to write a very scholarly paper, a quality paper, a scientific paper, for that purpose, for that research scholars, especially for that research scholars and the PhD guides and the eminent authors and the emerging authors, such a type of dozens and dozens of PhD repository, thesis repositories is given on the website of library. For example, DART, then Digital Repository of Thesis and Dissertation in Indian Universities, or the DSpace, or the IPSCO Open Dissertations, or the IMARI, or the, that means such a type of all links. For example, NDLTD, OATD, Open Thesis, Pakistan repositories, that means Shodhaganga repositories. All these are the thesis and dissertations repositories, not only in India, but also abroad. It is not necessary to visit any Indian university or any abroad university. Just you visit to the BAMU library website, you will get all theses and dissertations which is accepted by all over the universities in the world. And for that purpose, these are the very beautiful link which is given on our website. This is the another very beautiful link known as a Directory of Open Access Journal, that is DOAJ, which covers more than 15,000 plus e-journals. Out of that 15,000 e-journals, more than 50% journals are made available as an open access. And for that purpose, these are the very beautiful link. Another one is Directory of Open Access Book, which covers more than 29,000 plus e-books under the DOAB. And for that purpose, this is also very important and a very effective link of DOAB. The another one is International Thesis and Dissertation Repository known as YANDI LTD, which covers more than 59,50,000 plus theses and dissertations, which is accepted by the higher educational institutions all over the world. Friends, this is the very effective, and these are the, if you visit to the YANDI LTD website, you come to know that these are the recent submissions in YANDI LTD. This is the live data, you will get it. The another one is Open Access Thesis and Dissertation, that is OATD, which covers 51,53,000 plus thesis and dissertations. And if you observe the home page, then you come to know that these are the recent additions in OATD. For that purpose, OATD is also another source of information which will help to all research scholars and the PhD guides. And this is the Indian thesis repository known as Shodhaganga, developed by InfluNet, Gandhinagar, Gujarat, which covers more than 2,80,000 plus PhD thesis accepted by Indian University.
And this is the current scenario of that Shodhaganga. The another one is DART. That means the thesis and dissertation accepted by the European countries, which covers 8,28,000 plus theses. These are also another source of information. DSpace Cambridge is also another source of information for thesis and repositories. The another one is ISIM dissertations, also important. LSE thesis online. If you see the home page, and these are the various subjects, that means LSE has classified all these theses by various disciplines. And if you are interested in any discipline, as per your requirement, you can click and you will get the required thesis and dissertation with the help of e-thesis online. The another users help of BAMU, and which type of e-resources are made available in such a pandemic situation. And these are the, for example, we have customized the data, and we have provided to each and every department within the campus. For example, just you see, this is the Department of Management Science, and we have provided to each and every department how many e-journals are made available in each and every discipline, how many e-books are made available in each and every discipline. Such a type of customized data which will help us to provide in front of NAT, in front of NIRF. And for that purpose, if you see the Department of Management Science, there are 1,912 e-journals are there in the subject of management science only. However, there are 236,000 plus e-books in the subject of management science. And all these are made available on the BAMU library. And another one is, if you see, this is another a very important subject, that is the sociology. And how many theses and dissertations available in sociology? We have compiled the data all over the world, not from India. We have compiled the data all over the world, and we have given the link of each and every disciplines, especially sociology. If you see Digital Commons at the rate University of Nebraska, Lincoln, we have given. That means we have provided the university-wise, a topmost university-wise, which type of contents are there, and this is the last column is for link of that resources. And if you click on that link, then direct the link is open, and you will get the all thesis and dissertation in the subject of sociology only. And for that purpose, such a type of links by each and every disciplines, this is for sociology thesis and dissertations. And if you see another department, education, and also we have compiled such type of data. That is means this is the ready reckoner to each and every department. Just you click and you will get the required information with the help of that beautiful link. And for that purpose, here we have another given example of Department of Education. Another is computer science. Another one is commerce and management. We have given the thesis and repository with the help of various sources. It may be with the help of NDLTD, OATD, or the books, especially for Director of Open Access Books. And these are the some links specific for complete e-books in the subject of commerce and management. And for that purpose, the pupils, those who are pursuing their degree in commerce and management, such type of beautiful link will be helpful to anybody. The another one is, we have provided in pandemic situation no-do certificate to the KRC users. Okay, for that purpose, this is the current scenario about how our library staff can perform their duties. How many no-dos are circulated, issued to the teaching staff or non-teaching staff, PhD student, MPhil student, and the PG students. Because since 3rd June, just we have started our administrative work physically, and for that purpose, but it is not necessary to come in the library to each and every students and the scholar of the faculty members. We have provided all these notice certificate through their email ID. And for that purpose, another one is all 100% plagiarism checking articles and thesis and study service certificate is also provided
to all PhD scholars. And this is the data, how much thesis, how much synopsis, how much research papers, which we have checked with the help of Urkund anti-plagiarism software, and who have provided the CD submission certificate and plagiarism clearance certificate to each and every research scholars. And this is the format of CD submission certificate. And another is plagiarism checking. This is the proof of evidence which we have provided to each and every research scholars through their email ID. And this is the plagiarism report which we have already submitted to their research scholars with the help of that email. And another one is, this is the no-due certificate. Anybody can send their application for no-due certificate due to completion of all procedures as per the rules of KRC. And we have checked all if there is a no in book on their account, and then we will issue the no-due certificate through their email ID also. And as far as concerned, nowadays Urkund anti-plagiarism software is applied for English language only. For that purpose, we are going to apply another anti-plagiarism software which will be helpful to check the literature, check the documents which is made available in vernacular language. It may be in Hindi, Marathi, Sanskrit, or the Urdu language. We can check with the help of such a type of beautiful anti-plagiarism software, and for that purpose we have conducted a webinar on that software which will help to all regional language plagiarism itself. And the software's name is Black for Check, and for that purpose we have conducted one webinar also during such pandemic situation. For that purpose, and we have provided Urkund user ID password to all PhD guides. And this is the proof of evidence. As and when anybody wants to avail the facility of Urkund anti-plagiarism software, especially for PhD guides, we have provided a user ID password to all PhD guides. And all these are the proof of evidence of variety of webinars conducted by KRC, that is knowledge centers. Especially, we have also conducted a webinar on ATD and Show the Ganga and Show the Gangotri. Another one is, we have also conducted the webinar on research ethics and plagiarism issues during such pandemic situation. Also, we have conducted a very beautiful webinar on, please mute. I request to the host, please mute. Yes, sir. Yes, sir. Meghna madam, kindly mute all the participants, those who are speaking. Please mute all, please. And another beautiful event, that is webinar on Web of Science. Web of Science is nothing but it is the very beautiful indexing and abstracting databases, which will be helpful to know the research productivity of each and every institutions all over the world. For that purpose, we have conducted the one beautiful webinar on Web of Science also during such pandemic situation. And another one is the 3 days webinar on enhancing librarian skill. We also conducted such type of webinars. And also, for example, reopening the library, because we have started our library since 3rd of June, and administratively we have worked, and for that purpose we have provided very beautiful guidelines which will help to all stakeholders. And if you see, while entire library building are sanitized 2 times in the month of June, because it is necessary, because since March, April, May, library is completely closed due to lockdown. Since June, we have started our library. It's administrative purpose point of view, we have started some services, and we have entire library building are sanitized 2 times in the month of June also. And next one is, we have also taken the very sincere precautions, especially for
face shield purchased for circulation counters. Okay. The another one is hand gloves are using by library staff. The another one is mask is compulsory to each and everyone, maybe staff or the students or anybody, those who are visited to the library. And we have provided the mask to all employees of our library staff. The thermometer are using at entrance gate of library while user are entering the library. That nowadays, now these thermometer are using for all staffs or anybody wants to be visit to library. For that purpose, thermometer is compulsory. Hand wash is also provided in each toilets. And now the instructions for users, we have given the administrative approval duly signed by our Honorable Vice Chancellor, because our Vice Chancellor, respected Yevle sir, is also supported to me, especially for how to develop our library and how to give a very effective services in such a pandemic situation also. And for that purpose, the all general instructions regarding timings, regarding the services, regarding the facilities, whatever it may be, all such a type of instructions is also of each and every sections which is made available within the library. For that purpose, that means the book issue return timings or the renewal of books or the user instructions or regarding the library fine, all instructions is also we have given the administrative approval regarding the print or the regarding the e-resources, and where that e-resources can obtain, can get to each and every, and we have given the links of each and every e-resources. And for that purpose, we have also given the administrative approval for that purpose, definitely. And we have given the contact number of our staff members, which will help to all students. If there is any queries, then they can ask anytime. These are the phone numbers of our library staff of each and every sections. For that purpose, definitely the precaution is more and more important. Precaution is more and more important. It may be a sanitizing, it may be a protection gears and masks and physical distancing, or the cleaning of the library and engaging users where they live, or the online teaching and learning material. That means such a type of precautions which will help. And another focus is on the what will the future of libraries, because we don't have any idea about where that pandemic situations will end. We don't have any idea about that pandemic situation. And for that purpose, what will the future of libraries like? And these are the three modes. It may be a physical. Physical mode is nothing but the libraries which covers the all print resources. All print resources. And for that purpose, but space of library definitely will be increased in such pandemic situations. Dirtiness is not new to us, because if you visit to any library or any buildings, the dirtiness is the common problems in each and every institutions. And for that purpose, these are the various challenges. And no chance of survival library in pandemic situation, especially for physical mode. For that purpose, subject reference library, which will be helpful to survive in such pandemic situation. The another mode is hybrid model. Hybrid model covers physical as well as the digital. That means library is having a physical resources as well as digital resources or the online resources. And with the help of such a type of physical model, that is a hybrid model, definitely in such a pandemic situation, hybrid model will survive. And last one is the online library or online only. And considering the various problems faced by the Indian higher education institutions, especially in rural areas, it is highly impossible to sustain the online model or library, which covers only online services, which covers only digital services. With the help of variety of discovery tools, it is necessary to provide the services for, but online model is a more highly impossible in pandemic situation,
but in pandemic situation, hybrid model will survive the libraries definitely. The another last 5 minutes I want to take, because this is our future vision. Because teaching research aids alert service, we work on system to map the digital contents of the library, covering various databases or the peer review articles from reputed international journals to the courses taught by the faculty members at BAMU, as well as for the research scholars in their areas of research. And the objective is to make available of maximum of 10 articles, which is latest one, which is peer reviewed one, and which is made available as a full text, and which is completely relevant to their classroom teaching or the research areas in form of alert on a weekly or monthly basis as per their choice. And for that purpose, to achieve this, we propose an idea of setting up a teaching and research aid alert service for our faculty and research scholars with the help of various discovery tool platforms. And BAMU Library will plan such a type of develop a beautiful platform. The admin user interface is a simple form where the name, then email, then logo of the institute with the personalized alert header. Such a type of form is necessary. Such type of form we're going to set up. And just anybody wants to write a paper on a specific theme, they should have to submit the form online, which will be helpful to teaching research aid alert services. And for that purpose, as the app development progress, several other features like controlling the frequency sender email will be added. And the faculty member and research scholars are expected to send us 5 keywords related to their teaching and research areas. In the query form, the keywords of the end users can be entered, and the queries need very specific to improve the quality of relevancy there, and we need to enter limiters such as full text only, or English only, or the peer review only. We can even make it more specific, which will be helpful to our stakeholders. As review section was added to preview or remove previously set errors. When you click preview, you will get to see what alerts users are getting. When you click any of these keywords, you will get 10 alerts. 10 alerts is nothing but all these are the top 10 articles. Top 10 articles used by, or top 10 downloaded articles we will give with the help of such type of teaching research aid alert service. And this teaching research aid alert services has added a lot of value to their academic or the research related work. And at the same time, it will put a very resources to the optimum use. For that purpose, the discovery tool team will continue to maintain and update the application as required. And the usage of this service will be tracked, and reports can be generated to measure the effectiveness of these services. And for that purpose, definitely such a type of alert service which will be helpful to each and everyone, to each and every students or the research scholars and the faculty members or the emerging authors. For that purpose, thank you very much to the organizer who has given me a golden opportunity to share my views in front of you, especially how libraries can perform their services during such pandemic situation like COVID-19. If you have any questions, feel free to ask me. Thank you once again. Thank you, sir. Any question you
ask you can put your question in the chat box. Sir, one question is there version with us. Okay, no problem. You can ask. Please ask. Thank you so much for your Not audible. Lucid and Is very low. presentation on the libraries, how the libraries will change their face post Not at audible, sir. I think your network bandwidth is very low. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Please repeat your question, please. Actually, the participant had wanted a video sharing with him, so we will look after that, sir. Thank you so much. And, Okay. Thank you. And I'm really grateful to you for this presentation, and you have very lucidly You presented your presentation that and how after post COVID-19 and how the library is ready to handle any challenge about the library. You spoke on various issues, that is how to take safety measures in the library handle and any how challenge about the library. Scenario will change after post COVID-19. Thank you so much, sir, for being with us. Now, we are moving towards second session of this webinar. Second session will be conducted by Dr. Preeti Pohekar Madam. Before that, I invite to Dr. Nanasaheb Gaware sir to introduce our second session resource person. It's Nanasaheb Gaware. Hello. जय भवानी शिक्षण प्रसारक मंडळ गेवराई संचलित कला व विज्ञान महाविद्यालय पाटोदा राष्ट्रीय ई अधिवेशन या अधिवेशनामध्ये सहभागी सर्व सहभागार्थीचं या महाविद्यालयाच्या वतीनं आम्ही हार्दिक स्वागत करत आहोत. हे अधिवेशन लोक प्रशासन विभाग आणि ग्रंथालय विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेला आहे. या अधिवेशनाचे उद्घाटक आणि प्रमुख अतिथी म्हणून जय भवानी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार आदरणीय अमरसिंहजी पंडित साहेब हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या अधिवेशनाचे ब्रीज भाषक माननीय श्री कृष्णा भोगे सर, माजी विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, हे या ठिकाणी यांनी आत्ताच त्यांचं ब्रीज भाषण आपण ऐकलेलं आहे. या अधिवेशनासाठी साधन व्यक्ती म्हणून डॉक्टर धर्मराज वीर, ग्रंथपाल विभाग प्रमुख डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद हे या ठिकाणी आहेत. दुसरे साधन व्यक्ती डॉक्टर प्रीती मोहेकर मॅडम, राजर्षी शाहू महाविद्यालय लातूर ह्या या ठिकाणी आहेत. त्या प्रिपरेशन ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस
या विषयावरती आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांचा परिचय करून देण्याची जबाबदारी ही माझ्यावर या ठिकाणी आलेली आहे. त्यांचा परिचय करून देत असताना प्रीती मॅडम राजर्षी शाहू महाविद्यालय या ठिकाणी लोक प्रशासनाच्या विभाग प्रमुख आणि प्राध्यापक म्हणून 2001 पासून काम पाहत आहेत. त्यांचं कार्य हे शैक्षणिक बरोबर इतरही अशैक्षणिक क्षेत्रामध्ये त्यांनी उल्लेखनीय काम या ठिकाणी केलेलं आहे. त्यांनी ग्रामसभा जागृत अभियान आणि विद्यार्थी सर्वेक्षण यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी या कोविड-19 या संदर्भात जागृती करण्यासाठी यूट्यूबवरती विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. तसंच स्पर्धा परीक्षा याविषयी देखील विद्यार्थ्यांना त्यांनी यूट्यूबच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केलेलं आहे. मॅडमने लोक प्रशासन या विषयाची 9 पुस्तकं ही लिहिलेली आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी दैनिकामध्ये लिखाण देखील केलेलं आहे. विशेषतः दैनिक लोकमत, दैनिक सकाळ यामध्ये त्यांचं लेखन आपल्याला दिसून येतं. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड या अभ्यास मंडळाचे सदस्य म्हणून देखील ते त्या काम पाहत आहेत. त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती विशेषतः 9 शोध निबंधाचं वाचन या ठिकाणी आपल्याला केलेलं दिसून येतं. तसंच राष्ट्रीय स्तरावरती 11 शोध निबंधाचं वाचन मॅडमनी केलेलं आहे. मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली 6 MPhil विद्यार्थी आणि 7 PhD विद्यार्थी यांना त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि सध्या 5 विद्यार्थी त्यांच्याकडं काम पाहत आहेत. तसंच प्रीती मॅडम यांनी आकाशवाणी केंद्र औरंगाबाद येथे वृत्त निवेदक म्हणून देखील काम पाहिलेलं आहे. अशा पद्धतीनं डॉक्टर प्रीती मॅडम यांचं कार्य त्यांच्या या एकंदरीत पूर्ण परिचयावरून आपल्याला अत्यंत व्यासंगी असं दिसतं आणि म्हणून त्यांनी या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन करणार आहेत. मला या ठिकाणी त्यांचा परिचय करून देण्याची जबाबदारी या ठिकाणी दिली त्याबद्दल या ठिकाणी मी त्यांच्या संयोजकाचे आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you so much, sir, for introducing our guest. Now, may I request today Dr. Preeti Pohekar, madam, to make her presentation. It's over to Dr. Preeti Pohekar, madam. Thank you, sir. I'm clearly audible, na, sir? You're audible, madam. Thank you. Respected Amasya Pandit ji, respected Krishna Bhoge ji, Dr. Sharad Kulkarni ji, Dr. Shaukat ji, my friend Dr. Kalpana ji, Dr. Maharudra ji, and the whole organizer team, as well as all the participants. Very warm good morning. I'm going to present the topic or to deal the topic that is how to prepare civil services and what is the current position, situation of public administration in this contemporary society or in this contemporary civil service examinations. लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले अब मैंने हिंदी में शिफ्ट किया है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट और आप सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ हिंदी दिवस पर। और एक मेरा जो इस विषय में अनुभव है मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे। एक दोस्त का मेरे सुबह मुझे कॉल आया और उन्होंने मेरा स्टेटस देखा था व्हाट्सएप का और उसे देख के उन्होंने मुझे कॉल किया और वो मुझे बोलने लगी कि मैंने आपके स्टेटस पे देखा है कि आज आप कहीं पे प्रेजेंट करने जा रही हो। तो मैंने कहा हाँ करने जा रही हूँ। तो मैं आपको
एक विनती करना चाहती हूँ। मेरी दोस्त मुझे बोलने लगी, मैं आपको विनती करना चाहती हूँ कि आप उस प्रेजेंटेशन को, भले ही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आप उसको हिंदी में प्रेजेंट करोगी क्या? मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि आज हिंदी दिवस है और हम लोग जो हिंदी के हम सब अध्यापक हैं, हम ये ढूंढ रहे हैं कि आज कहाँ क्या क्या चल रहा है, और जो जो जहाँ जहाँ चल रहा है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में चले। हमारी जो हिंदी भाषा है उसे हमें आगे बढ़ाना है, और इसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अगर हिंदी में कुछ बात कहे तो अच्छा होगा। और मेरी उस दोस्त को, उनकी विनती को सामने रखते हुए, उसका आदर करते हुए, मैं अपना प्रेजेंटेशन कुछ हिंदी में भी करना चाहती हूँ। अगर मुझे ये जो प्रोग्राम के आयोजक है वो अगर मुझे परमिशन देते हैं तो मैं हिंदी और इंग्लिश ऐसे दोनों भी भाषाओं में अपना कुछ प्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत स्वागत, अच्छा लग रहा है हमें। धन्यवाद सर। तो मैं अपने विषय को आपके सामने रखना चाहती हूँ। अभी कीनोट एड्रेस में जो भोगे जी ने कुछ समस्याएं रेज की है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस कंटेम्पररी सोसाइटी फेस कर रहा है, और उन समस्याओं को जब मैंने उनके बारे में सोचा, ये ऐसे क्यों हो रहा है, जब वो बात कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और एक बात जो मेरे ध्यान में आई, मेरे दिमाग में आई, दैट इज दैट पब्लिक इज रोलिंग बैक फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पब्लिक जो शब्द है ना, सार्वजनिक प्रशासन जिसे हम कहते हैं, ये सार्वजनिक शब्द जो है इसमें से कहीं से पीछे पड़ रहा है, पीछे जा रहा है ये शब्द जो है। और इसका कारण क्या है, इसको हम जब ढूंढते हैं तो दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये है कि द वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड दैट इज, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी फैकल्टी है या हमारे स्टूडेंट्स है, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं आगे ले जाने में कम पड़ रहे हैं, हम बहुत पीछे पड़ रहे हैं इस चीज में। और ये होते जा रहा है कि एक ऐसा जमाना था कि हमारा जो विषय है वो सिविल सर्विसेज में ऑप्ट होने वाला सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, जिसे मैं कहना चाहूंगी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था हमारा, जो सिविल सर्विसेज में ऑप्ट किया जाता था। अब ये हो रहा है कि हमारा सब्जेक्ट अब बहुत पीछे पड़ रहा है, 5th 6th रैंक पे हम अब आ चुके हैं। ये ऐसे क्यों हो रहा है, और इस सब बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं मेरी स्लाइड्स शेयर करना चाहूंगी। मेरी स्लाइड्स आपको दिख रही है ठीक से? हाँ मैम। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये सोचा जाता है कि इट इज नाइदर अ प्रोफेशन नॉर अ स्पेशलाइजेशन। ऐसा कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है जहां पे सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटर सामने आ रहे हैं, आते हैं, उनको सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री दी जाएगी। ऐसा कोई भी कॉलेज, ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में नहीं है। जबकि हम देखते हैं एग्रीकल्चर अगर डिग्री हमें चाहिए तो देयर आर मेनी एग्रीकल्चर कॉलेजेस, देयर आर मेनी मेडिसिन कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, those are giving the degree of MBBS, BMS and so on. And there are many engineering colleges also जो इंजीनियरिंग की हमें डिग्री देते हैं। लेकिन जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर द रूट्स ऑफ ईच एंड एवरी डिसिप्लिन। क्योंकि जब तक राष्ट्र को चलाने की जो नैया है, जो नींव है, वो ठीक से नहीं चल पाएगी, राष्ट्र प्रगति नहीं कर पाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में ऐसा कोई भी एक कॉलेज नहीं है, ऐसी कोई भी एक यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए या सब प्रशासकों के लिए एक डिग्री के तौर पे रखा गया है।
This is the very key problem of our public administration or our whole administrative system. अब दूसरी बात यह है कि ठीक है, एक तरफ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं किया जा रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि कई सारे एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जबकि उनके पास कोई एक प्रोफेशन है, कोई एक प्रोफेशनल डिग्री उनके हाथ में है, फिर भी वो दूसरे हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं. ओके, दे आर वेलकम, वी आर वेलकमिंग देम. पर क्या हो रहा है कि मैन पावर का इसमें क्या हो रहा है, ये जो मैन पावर कहीं पे मेडिकल स्टडीज में लगना चाहिए था, लग रहा था, वो भटक के फिर से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर आ रहा है. ये जो मैन पावर कहीं पे इंजीनियरिंग की और जाना था, वो भटक के फिर से कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर आ रहा है. और जो मैन पावर पहले से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर जा रहा था, उस मैन पावर का क्या हो रहा है. तो अब इस स्लाइड को आप देखिए, पहला वाला जो टेबल है इस स्लाइड में, उसको आप गौर से देखिए क्या हो रहा है. 2009 तक ये सिचुएशंस थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो कैंडिडेट्स हुआ करते थे वो ह्यूमैनिटीज की शाखा से आते थे, लेकिन धीरे धीरे सिंस राइट 2010 ये होने लगा है कि ह्यूमैनिटीज की संख्या जो है वो बहुत मात्रा में कम होने लगी है. और उसी को आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग के जो छात्र है बहुत तेजी से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ओर जा रहे हैं. और इसमें क्या हो रहा है कि आप देखिए, सिंस 2010 आप अगर यूपीएससी के रिजल्ट्स देखते हो तो IITians एंड MBBS स्टूडेंट्स, ये जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम में आने का जो प्रमाण है वो बहुत बढ़ता जा रहा है. और जैसे जैसे वो प्रमाण बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमैनिटीज के, हमारे साइंस के, ट्रेडिशनल कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत पीछे जाते जा रहे हैं. और एक जमाना ऐसा था कि ह्यूमैनिटीज मतलब मुझे अगर कलेक्टर होना है तो मैं आर्ट्स फैकल्टी ही चूज करूंगी, ऐसा एक जमाना था. लेकिन अब ऐसा बिल्कुल ही नहीं रहा है. आर्ट्स फैकल्टी के या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स अब इस में इतने पीछे पड़ते जा रहे हैं कि अगर मुझे कलेक्टर होना है तो ये किया जा रहा है कि मुझे कलेक्टर होना है तो मैं IIT में जाऊंगी, मुझे कलेक्टर होना है तो मैं इंजीनियरिंग को जाऊंगी और फिर वो डिग्री मैं हाथ में लूंगी, खुद को मैं कहीं पे सेव करूंगी और फिर जाके मैं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर आऊंगी. तो ये हो रहा है हमारे ह्यूमैनिटीज के साथ. आप अगर दूसरा टेबल देख सकते हो तो इस टेबल में आप देखिए कि 2017-18 का जो मैंने इसमें डेटा रखा है, और इस टेबल में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है उसमें भी कई जगह है. 2017-2018 नियरली 559 इतनी सीट्स थी, इतनी पोजीशंस थी इंजीनियरिंग सर्विसेज में. लेकिन वहां जाने के बावजूद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है वो IAS, IPS, IFS वगैरह जो है इन सर्विसेज में ही ज्यादा आना चाह रहे हैं. और ये सब जो हो रहा है, इसमें हमारे ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं पे पीछे पड़ते जा रहे हैं. मैं आपको ये सब इसलिए बताना चाह रही हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होना चाहिए सिविल सर्विसेज में, वो ना होने के कारण क्या क्या हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ. तो इन सब in between this all the scenario क्या हो रहा है कि हमारे ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं वो पीछे पड़ते जा रहे हैं और इंजीनियरिंग, मेडिकल के स्टूडेंट्स जो है वो आगे जाते जा रहे हैं. ये ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए, मजे की बात तो ये है कि अब आप इस टेबल को देखिए. मजे की बात तो यह है कि ये बच्चे जो है वो कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं. इंजीनियरिंग के, मेडिकल के स्टूडेंट्स जो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में आते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं? तो वो सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी. ये एक सब्जेक्ट है कि बहुत ही तेजी से वो आगे आ रहा है, हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे करते हुए, पीछे छोड़ते हुए बहुत तेजी से वो सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी आगे आ रहा है. साइकोलॉजी है वो भी बहुत तेजी से आगे आ रहा है. और दूसरी और एक बात जो मैं आपको I want to
ब्रिंग योर अटेंशन वो है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी बहुत तेजी से आगे आ रहा है। और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग तेजी से आगे आ रहा है तो ऑब्वियसली हमारे जो सोशल साइंसेस के पूरे डिसिप्लिन्स हैं, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, वो पीछे पड़ते जा रहे हैं। मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या जो सोसाइटी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होना चाहिए, उन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सोसाइटी की पढ़ाई, सोसाइटी का जो फोकस होना चाहिए, वो कहीं पे पीछे पड़ते जा रहा है। और यही एक वजह है मेरे ख्याल से कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग बिहाइंड पब्लिक। लोग या सार्वजनिकता जो है इसमें, वो सार्वजनिकता ना रह के उसमें बहुत ही तेजी से टेक्निकलिटी जो है वो आने लगी है। भोगे सर ने एक स्टेटमेंट किया था उनके भाषण में, वो कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स आर फॉरगॉटन दैट दे आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। कैसे उनको ये ख्याल रहेगा कि उनको कॉमन मैन को आंसर करना है, कॉमन मैन को कुछ उनको जवाब देना है। ये एडमिनिस्ट्रेटर के ध्यान में रहेगा ही नहीं जब उन्होंने कॉमन मैन को पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने कॉमन मैन की क्या समस्याएं हैं, कॉमन मैन की क्या जरूरतें हैं, यही अगर जाना नहीं है तो वो कॉमन मैन की और कैसे देख पाएंगे, कॉमन मैन को वो क्या आंसर कर पाएंगे, जबकि वो सिर्फ टेक्निकल माइंड से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ रहे हैं। ओनली ड्यू टू सिक्योरिटी ऑफ द सर्विसेज जो IITians है, उन्हें देखा जाए तो बहुत बड़े पेमेंट की, बहुत बड़े सैलरी की उन्हें जॉब्स मिल सकती है, फिर भी वो इधर आ रहे हैं ड्यू टू ओनली सिक्योरिटी ऑफ द सर्विसेज। अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसका पासिंग परसेंटेज जो है बिल्कुल जब से सिविल सर्विसेज शुरू हुई है इन 1926, द फर्स्ट civil services examination was conducted in India and the Civil Service Commission also was established in 1926। और जब ये इस्टेब्लिश हुआ तब उसका फर्स्ट चेयरमैन जो था सर रॉस बार्कर, ये फर्स्ट चेयरमैन था ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कमीशन का, जो कि लंदन सिविल सर्विसेज कमीशन का एक मेंबर था। ओके, तो ये रॉस बार्कर ने क्या किया कि जिस तरह से लंदन में, जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन में सिविल सर्विसेज हुआ करती थी या आज भी होती है, उसी प्रकार से पूरा जो सेटअप है उन्होंने हमारे यहाँ लाया, इंडिया में लाया। और वो जो सेटअप है उसी सेटअप पे हम सालों साल चल रहे हैं। सिविल सर्विस कमीशन जो है सालों साल उसी पे चल रहा है। और ये होता था कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी भी हम जान ले, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट किया जा रहा था। लेकिन अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये हालत है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन UPSC had turned over towards public administration। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है नहीं लेना चाह रहे हैं। जो टॉप कैंडिडेट्स है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, वो ऑप्ट कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी को, वो ऑप्ट कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, सोशियोलॉजी को, या फिर साइकोलॉजी को वो ऑप्ट करना चाह रहे हैं, या एग्रीकल्चर है जिसे वो ऑप्ट करना चाह रहे हैं। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? ये हम जब सोचते हैं तो कुछ सर्वे इसके बारे में किए गए, और उस सर्वे में से जो फाइंडिंग्स हाथ में आए हैं उसमें वेरी इंपॉर्टेंट इशू और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माय व्यूज इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये हो रहा है कि हम जब इस सब्जेक्ट को समझने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से सब्जेक्ट हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम जब उसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो हम उसे ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में ये है कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म इस पे करना पड़ रहा है, इस सब्जेक्ट में करना पड़ रहा है, और वो खुली तौर से हम क्रिटिसिज्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट को हम जान तो लेते हैं लेकिन इसको हम लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसा कई कैंडिडेट्स कहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो लिटरेचर अवेलेबल है, अब हम मराठी की चर्चा करते हैं तो आप सब जानते हैं कि मराठी में देयर इज वेरी वेरी
मतलब बहुत ही कम लिटरेचर है मराठी में। आज भी ऐसे कई एरियाज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जिस पे मराठी में कोई भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, और फिर बच्चों को क्या करना पड़ रहा है, तो उन्हें हिंदी और इंग्लिश की ओर जाना पड़ रहा है। और ये हो रहा है कि हमारे मराठी बच्चे जो है वो सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छी तरह से रैंकिंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेचर, पर्टिकुलरली इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो अच्छी तरह से स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये हो रही है कि हिंदी और इंग्लिश में जो लिटरेचर अवेलेबल है वो लिटरेचर उन्हें पूरी तरह से ग्रास्प नहीं हो रहा है, ऐसा कई बच्चों का कहना है। कई बच्चों से मैंने इस बारे में, इस सिलसिले में मेरे एक प्रोजेक्ट के कंसर्न मैंने बातें की है, उनसे मैंने इंटरेक्ट किया है, और वो जो इंटरेक्शन मेरा हुआ है उसका फाइंडिंग ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां हमें सॉफ्ट स्किल पढ़ने तो मिलती है लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन इटसेल्फ। ये एक प्रॉब्लम हो रही है। अब ये भी मैंने फाइंड आउट किया है कि व्हाई टू ऑप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि ये हो रहा है कि मैंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी ये सब्जेक्ट है बहुत तेजी से आगे आ रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल मतलब हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तब भी हम ये बोलते हैं कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे जन्म से हमारे अंत तक हमारे साथ होता है, या हम सुबह से जब उठते हैं, हम जगते हैं सुबह, तब से तो सोते तक हमारे साथ में रहने वाला ये सब्जेक्ट है। Directly or indirectly we are concerned with public administration on the each and every step of our life, each and every step in our daily life, in our routine। जो है हमें इस सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमारा ये कंसर्न जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, लेकिन ये कंसर्न हमारा हो रहा है, हम इस डिसिप्लिन को टच कर रहे हैं जानते या अनजाने में। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है वो गवर्नमेंट मैकेनिज्म, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो सिविल सर्विसेज एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज सिविल सर्विस, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिंग, हाउ टू एडमिनिस्टर, ये सब चीजें हैं, ये इस विषय में हमें देखने को मिलती है। और ये एक अप्लाइड ऐसा सब्जेक्ट है, जो थ्योरी है वो प्रैक्टिस में। अब जब भोगे सर बात कर रहे थे तो मैंने ये भी एक मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो हम ऐसे कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफर देन एडमिनिस्ट्रेटिंग। व्हाई इट इज डिफर देन एडमिनिस्ट्रेटिंग, व्हाई द डिफरेंस हैज ऑकर्ड, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि थ्योरी और प्रैक्टिस इसमें कहीं पे एक दरार आने जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये जब मैं सोचती हूँ, बेसिकली ये तो सब्जेक्ट है अप्लाइड, फिर भी ये एप्लीकेशन क्यों प्रॉपरली नहीं होने जा रही है, तो ये भी जब हम सोचते हैं तो इस सब्जेक्ट का हमें फ्यूचर देखना पड़ेगा कि फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है तो उन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी जो है वो ठीक से उन्होंने समझी नहीं है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी ठीक से समझ जाएंगे तो शायद उसे अप्लाई भी अच्छी तरह से वो कर पाएंगे, और गवर्नमेंट मैकेनिज्म जो है उसको भी अच्छी तरह से वो अप्लाई कर पाएंगे। और फिर दूसरी बात यह है इस सब्जेक्ट के बारे में जो हम हमेशा क्लास में कहते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। बहुत ही ये जो सब्जेक्ट है इजी है, 2 या 3 पढ़ने में आपको इसकी कोई भी थ्योरी जो है समझ में आ जाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कई कैंडिडेट्स जो है यूपीएससी में जो ऑप्ट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वो कैंडिडेट कहते हैं। ये सब्जेक्ट जो है मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स की तरह इस सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छी तरह से स्कोर कर पाते हैं, ये भी यूपीएससी क्रैक करने वाले कई कैंडिडेट्स ने कहा है। अब जब मैंने आपको अभी ये कहा है कि इस सब्जेक्ट में मराठी में स्टडी मटेरियल बहुत कम है, इंग्लिश में बहुत सारा स्टडी मटेरियल इस डिसिप्लिन में अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश में हम इसको कितना रेफर कर पाते हैं इस लिटरेचर को। ऐसा भी इस सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है कि जब हम इसको क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो आंसर्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हिस्ट्री के बारे में ऐसे कहा जाता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है बहुत घूम फिर के आता है, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल सीधी तरह से आता है, सीधी तरह से पूछा जाता है और हम उसे बहुत सीधी तरह से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और
बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, जो जनरल स्टडीज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा सिलेबस जो है वो जनरल स्टडीज में ओवरलैप होता है। मतलब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर पढ़ते हो तो आपका जनरल स्टडीज का नियरली 60% सिलेबस इज कवर्ड अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको जनरल स्टडीज का और बस 40% अलग से पढ़ाई करना है। मतलब एक तीर में दो कमान आप इसमें मार सकते हो। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ सकते हो और आप जनरल स्टडीज भी आपका बहुत सारा इसमें कवर कर सकते हो। और भी इसमें एक बात ये जो है, ऐसे का जो पेपर होता है, अब सीसैट वगैरह जो शुरू किया है, एमपीएससी यूपीएससी सब एग्जाम्स में सीसैट जो है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, आप सिविल सर्विसेज में जाने के लिए कितना फिट हो, आप सिविल सर्विसेज में जाने के लिए कितना तैयार हो, ये उसमें देखा जाता है। और उस सीसैट में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा सिलेबस जो है आता है। और उसमें जो भी ऐसे का पेपर हो या इंटरव्यूज में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी प्रैक्टिस बेस्ड पूछे जाते हैं, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने थ्योरी बेस्ड पढ़े हैं, उसको आपको इंटरव्यू में प्रैक्टिकल बेस्ड जो है आपको उसको रिप्लाई करना है, आंसर करना है। तो इन सब चीजों को हम जब देखते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिविल सर्विसेज में जाने के लिए और सिविल सर्विसेज में अच्छी तरह से टिक पाने के लिए एंड टू बी आंसरेबल टू अ कॉमन मैन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सब्जेक्ट है कि जो आपको बहुत अच्छी तरह से खड़ा कर पाएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से वो आधार दे पाएगा, ऐसा ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को या टोटली सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत कम चीजें हैं कि जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले जो मैं देखती हूँ वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं देखती हूँ कि students are not aware of their syllabus also. What is their curriculum that for that particular exam? Students are not aware or not familiar for that syllabus also. Many a times I observed. तो आपको ये करना है कि सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम देते हो, बिल्कुल मतलब ग्राम सेवक हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, यूपीएससी हो, आपको किसी भी एग्जाम को सबसे पहले तो ये करना पड़ता है। सिविल सर्विसेज तो छोड़िए, मैं तो कहूंगी कि आप कोई भी डिग्री करते हो, आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, इंजीनियरिंग मतलब बीई कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, कोई भी डिग्री आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो ये है कि आपको आपका सिलेबस पूरी तरह से अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रही हूँ, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, कई सारे बच्चे जब मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं मुझे पूछते हैं, मैडम मुझे तो मालूम नहीं था कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट है। तो क्यों ऐसे होता है? तो आपको आपका सिलेबस ठीक से मालूम नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस आपका क्या है ये देखना है और उसे सिर्फ देख के छोड़ना नहीं है। तो आपको आपके दिमाग में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि दिस इज द पार्ट ऑफ माय सिलेबस ऑफ यूपीएससी और दिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ माय बीए डिग्री और एमए डिग्री और व्हाटएवर। दूसरी बात यह है कि आपको सिविल सर्विसेज के लिए बिल्कुल कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग की भी आपकी एग्जाम हो या यूपीएससी की भी आपकी एग्जाम हो, सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपका स्टडी प्लानिंग अच्छे से होना चाहिए। कोई भी आप जब सिविल सर्विस के लिए जाते हो, एग्जाम के लिए जाते हो, तो मिनिमम 6 months to 3 years पीरियड जो है वो आपको पूरी तरह से उसी एग्जाम के लिए लगाना चाहिए, उसी एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से टाइम देना चाहिए। कौन सी एग्जाम को आप अपियर हो रहे हैं उस पर ये डिपेंड करेगा। यूपीएससी अगर आप अपियर कर रहे हो तो मिनिमम 2 years आपको प्लान करना है कि ये 2 years में आपको क्या करना है। ये प्लान करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगी कि कुछ बुक है, प्लानर बुक्स है कुछ यूपीएससी के या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स के प्लानर बुक्स है, वो प्लानर बुक्स आप खरीदिए या उसे आप पढ़िए और उनके आधार से आप अपना प्लान तैयार कीजिए कि मुझे किसी भी सिविल सर्विस को जाना है, एग्जाम को जाना है, तो मुझे किस तरह से मेरा प्लान तैयार करना है। और फिर तीसरी बात जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जैक्टली कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करना है। अब देखिए इंटरनेट का जमाना चल रहा है और इस जमाने में इतनी सारी वीडियोस है, इतनी सारी ब्लॉग्स है, वेब पेजेस है कि कई बार मैं भी खुद थोड़ी परेशान हो जाती हूँ कि मुझे कोई रेफरेंस लेना है तो मैंने कहाँ से लेना है वो रेफरेंस, कौन सा रेफरेंस बिल्कुल रिलायबल है, कौन सा रेफरेंस रिलायबल नहीं है। अब जब यूट्यूब की सर ने मेरे बात की तो उसी के सिलसिले में मैं आपको एक मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि नेट सेट की एग्जाम्स अब 16th को डिक्लेयर हुई थी कि 16th September नेट सेट की एग्जाम हो जाएगी और बस उसी डेट को लेके, उसी तारीख को लेके कई यूट्यूबर्स है, कई ब्लॉगर्स है, कई वेब पेजर्स है
और कई न्यूज़पेपर्स में भी, मैगजीन्स में भी इतना हंगामा खड़ा हुआ कि बच्चों को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग। कोई बोल रहा है कि बिल्कुल एग्जाम होने ही नहीं वाली है, मतलब नीट के बारे में भी ये हुआ कि कोई बोल रहा है कि एग्जाम बिल्कुल हो ही नहीं सकती, वो पोस्टपोन ही हो जाएगी, और कोई बोल रहा है कि एग्जाम बिल्कुल हो जाएगी। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली ये चीजें हैं। तो बच्चों के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हाउ टू सिलेक्ट द स्टडी मटेरियल। आपको जो रेफर करना है वो किस तरह से रेफर करना है, वो कितना ट्रस्ट वर्दी है जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और इस विषय में आपको मैं अभी नहीं बात करूंगी, ये कुछ अलग सा विषय है, लेकिन मैं आपको अभी इतना ही कहना चाहूंगी कि यू हैव टू डिसाइड योर टीचिंग मटेरियल और स्टडी मटेरियल, कि आपको कोचिंग क्लासेस लेना है या सेल्फ स्टडी करना है, ये आपको डिसाइड करना है। फिर आती है बात स्टडी आवर्स की। ये जरूरी है क्या कि आप 18 घंटा पढ़ाई करें? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि आप कितना कम टाइम पढ़ते हो और कितना क्वालिटेटिव आप पढ़ते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आपको ये करना है कि आपकी स्टडी आवर्स जो है वो डिसाइड करना है कि मैं 4 ही घंटा पढ़ूंगी, लेकिन 4 घंटा में और कुछ भी नहीं करूंगी, मैं मेरे मोबाइल को भी हाथ नहीं लगाऊंगी, या मैं मेरे किसी फ्रेंड को भी चैट नहीं करूंगी, ये आपको डिसाइड करना है। और फिर ये जो आपने डिसाइड किए हुए स्टडी आवर्स है, ये स्टडी आवर्स आपको पूरी तरह से सिर्फ स्टडी के ही लिए आपको लगाने हैं। फिर आती है बात डिस्कशन की। अब इसमें और एक प्रॉब्लम मैं आपको आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमारा जो मराठवाड़ा या विदर्भ वगैरह ये जो डिविजन्स है, ये डिविजन्स में क्या होता है कि लोग बहुत ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते हैं। जब मैं क्लास में भी बच्चों को पूछती हूँ कि आपको क्या होना है, तो बच्चे बिल्कुल फ्रीली ये नहीं कहते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे एमपीएससी देना है, या मुझे और कोई एग्जाम सिविल सर्विस की देना है। ये बच्चे मतलब बोल्डली कहते नहीं है, खुद से वो ये खुद होके आगे बढ़ के ये कहते नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में उनके जहन में एक ये डर बैठा हुआ है कि मैं अगर कहीं कह दूं कि मुझे आईएएस बनना है, अगर मैं नहीं बनती हूं तो क्या हो जाएगा, ये एक डर बैठा है जहन में। तो ये एक कारण है कि ओपनली डिस्कस भी हम लोग नहीं करते हैं, हमारे बच्चे ओपनली डिस्कस भी नहीं करते हैं कि उन्हें क्या बनना है और किस तरह से बनना है। तो पहली चीज तो यह है कि पहले एक्सेप्ट करना है और ओपनली एक्सेप्ट करना है कि मुझे आईएएस बनना है, भले मैं हो जाऊं या ना हो जाऊं, लेकिन मुझे होना है, यही मेरे सामने आज है कि मुझे आईएएस ही होना है, मुझे एमपीएससी ही देना है, मुझे डिप्टी कलेक्टर ही होना है। ये मुझे पहले मेरे दिमाग में बिल्कुल मेरे जहन में पहले बिठाना है, और फिर उस अकॉर्डिंग मुझे डिस्कस करना है, मेरे फ्रेंड से हो, मेरे टीचर से हो। ये मुझे पहली जो बात है दिमाग में रखनी चाहिए कि ओपनली मुझे इसके बारे में बात करनी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे मैं बंद करके मेरे दिमाग में रख दूं, ऐसी कोई बात नहीं है ये। इसलिए डिस्कशन जो अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ होना चाहिए, ओपनली डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अब फिर से और एक जो बहुत प्रॉब्लम इसमें मैं देखती हूँ वो है हाउ टू स्टडी। एक ही टॉपिक पढ़ना है मुझे, तो उस टॉपिक को मुझे पढ़ते टाइम इस तरह से डील करना है कि मुझे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए और इंटरव्यूज के लिए भी उस टॉपिक को मुझे पढ़ना है। तो इस टॉपिक को मैं इन तीनों के मुताबिक किस तरह से पढ़ना है मुझे, इसका एक टेक्निक मुझे आना बहुत जरूरी है। और फिर आखिरी बात जो है, जो मैंने पहले कही है कि जो बहुत बुरी तरह से एडिट की हुई बुक्स होती है, लिखी हुई बुक्स कुछ होती है, या मटेरियल कुछ होता है जिसमें बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन दी होती है। एक बार अगर मुझे ये मालूम होता है कि किसी एक बुक में बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है, मैं उस बुक के और फिर से जाती नहीं हूँ, उसे मैं फिर से हाथ नहीं लगाती हूँ। तो ये सब बातें, और फिर ये सब करने के लिए और एक हमारे मतलब क्या होता है कि हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं मराठवाड़ा में, विदर्भ में, और फिर जब उन्हें सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स के लिए जाना होता है, फिर वो क्या चूज करते हैं कि मैं पुणे जाऊंगी, मैं बंबई जाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी और वहां जाके मैं पढ़ाई करूंगी। मुझे हमेशा ये सवाल सताता है कि क्यों मुझे कहीं और जाना चाहिए, क्यों मैं लातूर में बैठ के, क्यों मैं गढ़ी में बैठ के क्यों नहीं मैं पढ़ पाती हूँ सिविल सर्विसेज। अब तो मैंने कहा है कि सेल्फ स्टडी करने की बहुत सारे वेज जो है इंटरनेट के जरिए हमारे तक आ पहुंचे हैं, हमें भी जाने की जरूरत नहीं, वो खुद हमारे तक आ पहुंचे हैं। फिर क्यों मुझे जाना है दिल्ली जाके, क्यों मुझे, मतलब मेरा बेस तो मैंने तैयार किया है मराठवाड़ा में, लातूर में रह के मैंने मेरा बेस तैयार किया है, गढ़ी में बैठ के मैंने मेरा बेस पढ़ाई का तैयार किया है, और मैं जाके
सिविल सर्विसेज दे रही हूँ दिल्ली में जाके, और फिर क्या हो रहा है कि मेरा एक बच्चा जो सिविल सर्विसेज क्रैक करता है, वो होता तो है मेरे कॉलेज का बच्चा, यहाँ पे उसने ग्रेजुएशन किया होता है, यहाँ पे उसने पूरी उसकी जो तैयारी है की होती है, और फिर वो जाके दिल्ली में जाके कुछ 5-6 महीने कोई क्लास करता है और फिर कहता है कि दिल्ली के स्टूडेंट्स जो है इतने इतने यूपीएससी में क्वालिफाई हुए हैं, जबकि बच्चे हैं हमारे। तो ये जो है एक कंट्रोवर्सी कहीं से हो रही है। इस कंट्रोवर्सी से भी हमें हमारे बच्चों को मतलब अब जो सुन रहे हैं, अगर फैकल्टीज है तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस कंट्रोवर्सी से भी हमें हमारे बच्चों को बचाना है। और अगर आप स्टूडेंट्स हो, आप अगर सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हो, जो सुन रहे हो, तो मैं आपको भी ये कहना चाहूंगी कि इन सब बातों को आप थोड़ा सा सोचिए। ये जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत पढ़ने की, हमारे से ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत होती है। उनका पूरा जो ग्रेजुएशन है उन्होंने बहुत पढ़ पढ़ के कंप्लीट किया होता है। उसके कंपैरिजन में हमारी जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है, बीए, बीएससी, बीकॉम, हमारी पढ़ने की आदतें थोड़ी सी कम होती है उनके कंपैरिजन में, और फिर क्या होता है कि हम सिविल सर्विसेज के पढ़ाई में भी नहीं टिक पाते हैं। दूसरी बात तो ये होती है कि हमारे दिमाग में बहुत डर है वो न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स का। अब जब ये इंजीनियरिंग के बच्चे हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट कर रहे हैं, हमारे एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्ट कर रहे हैं, साइकोलॉजी को ऑप्ट कर रहे हैं और क्वालिफाई हो रहा है एग्जाम्स, तो फिर हम ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, हम साइंस वाले बच्चे क्यों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से इतना डरे? तो ये डर हमें हमारे दिमाग में से पहले निकाल देना है। और फिर देखिए, ये सब डर आप अपने दिमाग में से अगर निकालेंगे और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हमको अगर बनना है, तो उसके लिए हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरी है उसे हमको हमें उसे जान लेना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी को हमें उसे पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी को, और फिर जाके हम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हम कहीं बन पाएंगे। ये ऐसा मेरे व्यूज है। तो ये मेरे कुछ व्यूज जो है मैंने आपके सामने रखे हैं, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में कंटेम्प्रेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप ऑप्ट करते हो, तो इस विषय के जरिए से आप एक बहुत अच्छे ऑफिसर की तौर पे भी खड़े हो पा सकते हो। ये मेरा खुद का ये मानना है। एंड विथ दिस my views, I conclude my presentation कि सिविल सर्विसेज जो है एक ऐसी सर्विसेज है जो आपको बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन दे सकती है, क्योंकि यू आर कनेक्टेड विद द कॉमन मैन थ्रू द सिविल सर्विसेज। तो आपको ये बहुत ही सेटिस्फैक्शन काम का दे सकती है। सिविल सर्विसेज ऐसी है कि जो आपको इकोनॉमिकल सेटिस्फैक्शन दे सकती है। जो आप का सैलरी होता है, बिल्कुल एक प्रोटेक्टेड सैलरी आप इससे पा सकते हो। तो एक इकोनॉमिकल स्थिरता जो है आपको, वो ये सिविल सर्विसेज दे पाती है। अब सवाल ये है कि हमें कितनी अच्छी तरह से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की ओर जाना है। और बिल्कुल ही मैं ऐसे मानती हूँ कि वो बिल्कुल ही कठिन नहीं है, बहुत ही आसान बात है। उसको आप कितना आसान करोगे। एक आखिर में एक बात कहना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम हमारी है कि हम हमेशा हमारी समस्याओं को हमसे बहुत बड़ा करते हैं। हमारी समस्याओं को हमें हमारे दिमाग में नहीं रखना है, दिमाग के ऊपर नहीं रखना है, उनको हमें हमारे पाँव के नीचे रखना है। तो समस्याओं को अगर हम पाँव के नीचे रखेंगे तो आई थिंक लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। और सिविल सर्विसेज ही क्या, ऐसी कई बहुत कठिन रास्ते हैं जो कि आप बहुत अच्छी तरह से पार कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपना जो विचार है इसको समाप्त करूंगी और सब आयोजकों का मैं आभार मानना चाहती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू डील अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। So much, madam, for your lucid, informative, and insightful session. Actually, you have spoken on various issues, and you have emphasized on that how public administration is important. And you rightly pointed out that how public administration was subject near to
various aspirants of the IAS. But nowadays, participants are moving towards another subject, but still public administration has its relevance. And of course, as you guided right now, that public administration will be, and you also, while concluding your remarks, no problem is greater than and thought part, madam. So thank you so much for this session. Thank you so much. Participants in their papers. And for this, we have chairperson Dr. Nirmala Padmawat is working as an associate professor in English at Nutan. She is also IQ. She is author of 6 books. She has presented research papers at various platforms. She is a research guide in English. Students are taking her guidance for doctoral research. She is also a critic. May I invite Dr. Nirmala Padmawat, madam, to take Thank the you, charge sir. of the technical session. Thank Thank you, you so sir. much, madam. It's Thank you, over sir. to Dr. Nirmala Padmawat, ma'am. Thank you, sir. All the dignitaries. Yes, madam, welcome. Good afternoon, all the dignitaries present here. For this technical session, first we have Miss Archana Badne, who will present her paper on importance of English in contemporary world. Mrs. Badne ma'am. Badne ma'am, are you there? Yeah, yes, ma'am. You can present your paper now. Yeah, ma'am. Good morning to all, everybody. Then, respected chairperson, my friend, Dr. Nirmala Padmawat, madam. That my topic of today's presentations, importance of English in contemporary era. I'm reading the brief paper. English is the most used and spoken language around in this technical and global world. At least 1 out of 5 people can speak or understand English. Learning English is very necessary in the contemporary era. English is a language which is spoken and understood by many people in most countries of the world. In fact, it is the most important means of communication among the various countries of the world. In this way, English helps to spread knowledge and progress. In this contemporary world, English will give you the power to succeed. Learning English will increase your chances to get a job, participate in discussions, and improve your networking skills. English helps you to increase your educational opportunities. Early exposure to English helps to polish up and cultivate a good command of the language. Living in a globalized 21st century, it is important and relevant to be able to communicate to people from various parts of the world. As far as the part of survival and earning in concerns in modern era, English opens new career opportunities. First and foremost, learning English can help you pursue and obtain more career opportunities. These days, the job market is global. Many companies need employees who can communicate with partners and clients all over the world. Thank you to all of you. Thank you, ma'am. As far as English is concerned and the topic of administration, already other speakers also told the role of administration in global era, in contemporary era is very important. But since industrialization is started,
the term of management and administration come out in an informal way, but technical research and other research made it as a formal. And now in each and every sector, including languages, family and all, the role of administration is very important. So it is a interdisciplinary. As Badne ma'am said, in this global era, the command over English language can make a good administrator at a global level. Now I would like to call Mr. Pagore RB, who will present his paper on the same topic. Pagore sir, are you there? Pagore sir. Technical team, can you call the Pagore sir? He's not present in the meeting now. I think he is not present there. So I would like to hand over the session to anchor. Thank you so much, madam. I think Pagore sir is not present at the moment. So we are in the last session of the webinar, and that is the valedictory session. So may I request to the Honorable Principal of the college, Dr. Shaukat Syed sir, to make a presidential address of the webinar. Dr. Shaukat Syed sir. Sir, I think he is Syed also sir. not हाँ, online. आवाज आ रही है आपकी? Yes sir, yes sir. अच्छा, मेरी आ रही ना? Yes sir, you are audible sir. अच्छा अच्छा। आज के इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातों का जिक्र हुआ, जिसमें बीज भाषक के रूप में आदरणीय भोगे जी ने वाकई में सारी बातों को हमारे सामने उजागर किया। उसके बाद हमने ये देखा कि धर्मराज वीर जी ने भी यथोचित ज्ञानवर्धक बातें हमारे सामने रखी। सारी बातें को मद्देनजर रखते हुए सारी बातें हमने आत्मसात की। उसके बाद प्रीति मैडम जी ने आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पर एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैडम अपना मंतव्य अंग्रेजी में देना चाह रही थी, लेकिन उनके किसी फ्रेंड ने ये कहा कि आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप अपना मंतव्य हिंदी में दे। और उन्होंने हिंदी में दिया, अपना मंतव्य हिंदी में दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैडम हिंदी की प्रोफेसर है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं प्रीति मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस मौके पर यानी हिंदी दिवस के अवसर पर उन्होंने हिंदी में मंतव्य अपना दिया। वैसे मैं चैट बॉक्स में देख रहा था कि एक सज्जन अफगानिस्तान से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये भी कहा कि मैं हिंदी नहीं जानता। मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने जो अपना मंतव्य दिया वो सराहनीय है। हम सभी को इन सारे वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से लाभान्वित किया है। मैं महाविद्यालय की ओर से आप सभीयों का आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और अपना मंतव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
Thank you so much, sir, for your presidential address. And now, may I invite to Dr. Maharudra Gawane for the vote of thanks. Maharudra Gawane. Am audible? Am I audible? हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है. Good morning to all. Good evening to all. I am very happy to propose vote of thanks on the occasion of one-day National E-Conference on role of public administration in Indian contemporary society, organized by Department of Public Administration and Department of Library of Jai Bhavani Shikshan Prasarak Mandal, Art and Science College, Patoda. First of all, I am really grateful to our patron, Honorable Sri Shivajirao Dada Pandit, for his valuable motivation to organize such an academic program. I am really thankful to today's inaugurator and president of Jai Bhavani Shikshan Prasarak Mandal, Honorable Sri Amarsiaji Pandit Sahib, for giving us his valuable time and guidance. I am thankful to Honorable Krishna Bhoge sir, ex-IAS officer and Divisional Commissioner of Aurangabad region, for giving wonderful keynotes address on this occasion. I am really indebted to Dr. Dharmaraj Veer for enlightening us on impact of COVID-19 on libraries, as a resource person of conference, for taking his valuable time for his event. I am thankful to another resource person, Dr. Preeti Pohekar Madam, for taking her important time and guiding us as a resource person. Now, I am thankful to the principal of the college, Dr. Syed sir, for motivating us to organize the event again. I am thankful to the all participants and technical supports, Ajanta Prakashan and Meghna Joshi. I am thankful to my college staff for helping us in this event. Last but not least, I am thankful to the non-teaching staff for their support. Lastly, I am thank you one and all for making this event successful and with permission of the chairperson. The program will end with national anthem. I request all the participants to stand for the national anthem at their place. भारत माता की जय. I declare that the event is over. Thank you so much. Thank you so much to everyone. Thank you.